हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू क्रेडिट कार्ड सागा। आज हम बात करने वाले AMEX MRCC की, जो कि एक मेंबरशिप रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड है प्रोवाइडेड बाय AMEX। इसके बहुत सारे फीचर्स, बेनिफिट्स एंड वेवर्स है। आज हम सब डिस्कस करेंगे इस कार्ड के बारे में। टू स्टार्ट ऑफ विद द वीडियो, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप ये एंजॉय कर सकते हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री। एंड इसी के साथ साथ ये मैं एंड में बताऊंगा इस वीडियो के कि ये प्रीमियम मुझे कैसे मिला, एंड सेकेंडली जो भी आपकी ज्वाइनिंग फीस है वो कैसे फ्री हो सकती है इस कार्ड के, कैसे आप इस कार्ड को 1 साल के लिए ट्राई कर सकते हो, बेनिफिट्स चेक कर सकते हो, एंड देन इफ यू डोंट लाइक द कार्ड यू कैन कैंसिल इट आउट। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस कार्ड की अगर हम ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो ये 1000 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट ईयर पे स्टार्ट होता है, एंड उसी के साथ साथ आपको एक वेलकम गिफ्ट पे 4000 AMEX पॉइंट्स मिलते हैं, विच इज MR पॉइंट्स, मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स। टॉकिंग अबाउट इसके रिन्यूअल फीस की, सो उसकी आपकी फीस है 4500, बट देयर इज अ कैच। इफ यू कैन स्पेंड 1.5 lakhs इन द कैलेंडर ईयर, विच इज जब आपका सेकेंड ईयर शुरू होता है कार्ड का आफ्टर द फर्स्ट ईयर, तो कार्ड ईयर एंड तक अगर आप 1.5 लाख स्पेंड करते हैं तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, इट इज टोटली वेव्ड ऑफ। इसमें हमें AMEX ने एक फ्लेक्सिबिलिटी और दी है। इफ यू आर ओनली एबल टू स्पेंड 90,000 रुपीज इन अ कैलेंडर ईयर ऑफ अ कार्ड मेंबरशिप, then you only have to pay 50% of the renewal fees, and if you spend more than 1,50,000 then you need to pay nothing as a renewal fees. So just to clear it out, इसको हम समराइज कर लेते हैं। अगर आप 0 से 90,000 तक खर्च करते हो आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी। आप 90,000 से 1.5 लाख तक खर्च करते हो आपको 50% फीस देनी पड़ेगी। आप 1.5 लाख से अबव खर्चा करते हो तो आपको 0 फीस देनी पड़ेगी। इसी के साथ अगर हम बात करें इसकी ज्वाइनिंग और रिन्यूअल बेनिफिट्स की, ज्वाइनिंग पे आपको 1000 रुपये देने पे 4000 MR पॉइंट्स मिलते हैं, एंड आप जब सेकेंड ईयर पे अपनी फीस पे करते हैं तो उसके बाद आपको 4500 रुपीज़ पे करने के बाद आपको 5000 MR पॉइंट्स मिलते हैं। जनरली 1 MR पॉइंट इज इक्वल टू 0.25 रुपीज़। डिपेंड्स कि आप इसको कैसे रिडीम कर रहे हैं। जो AMEX इसकी कैश की कन्वर्जन की रेशियो देता है, दैट इज 1 MR पॉइंट इज इक्वल टू 0.25, which means if you redeem 4 points then you'll get 1 rupees of cash credit in your statement. बट इस वीडियो के एंड में हम ये भी बात करेंगे कैसे आप अपने रिडेम्पशन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं फॉर ऑल योर AMEX कार्ड, स्पेसिफिकली फॉर MRCC कार्ड। अब अगर हम इसके रिवॉर्ड्स की बात करते हैं तो इसका जो रिवॉर्ड रेट है दैट इज 1 पॉइंट ऑन एवरी 50 रुपीज स्पेंड, which is approximately 0.25 rupees on every 50 rupees spent. अगर आप इसकी points to cash redemption में देखें तो it is approximately 0.5% of whatever you spend, you get that back in your MR points. But there's a catch. इस कार्ड का जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि इसमें 2 स्कीम्स चलती है। फर्स्ट स्कीम इज अगर आप किसी भी महीने में 4 ट्रांजैक्शंस करते हैं 1500 प्लस की, विच इज 1500 प्लस 1500 प्लस 1500 प्लस 1500 प्लस 4 ट्रांजैक्शंस इक्वलिंग टू मोर देन और इक्वल टू 6000, you get bonus 1000 MR points apart from the points you get on spending. तो फॉर एग्जाम्पल आपने टोटल 2500 रुपये की 4 ट्रांजैक्शंस की, दिस इज फॉर एन एग्जाम्पल 1500 की लिमिट है। अगर 1500 से ज़्यादा कर रहे हैं आप तो यू गेट द सेम अमाउंट ऑफ बोनस पॉइंट्स, वो चेंज नहीं होता। तो अगर आप 2500 रुपये की 4 ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं सो आपको 10,000 पे जो भी MR पॉइंट्स मिलने हैं 50 रुपये पे 1 MR पॉइंट के हिसाब से, दैट इज डिफरेंट। एंड वो 4 ट्रांजैक्शंस करने के बाद जो आपको 1000 मिलेगा दैट इज डिफरेंट। Second benefit that is there is if in a calendar month you can spend more than 20,000 rupees, you'll get again more 1000 bonus MR points. So अगर आपकी previous condition भी fulfill होती है, which most probably unless आप 1000 रुपए की 20 transactions करते हो then it will not be fulfilled because उसकी limit है 1500. तो अगर आपकी ये दोनों चीज़ें फुलफिल होती है एंड यू समहाउ क्रॉस द बैरियर ऑफ 20,000 रुपीज़ इन अ मंथ, यू गेट बोनस 2000 MR पॉइंट्स। तो ये 2000 MR पॉइंट्स आपके अप्रॉक्सीमेटली कैश रिडेम्पशन के हिसाब से भी 500 रुपये बनते हैं। नाउ इफ वी रिडीम दिस मोर स्ट्रेटेजिकली, वी ट्राई टू गेट दिस अप्रॉक्सीमेटली एट अ 1 रुपीज़ रेट, देन आई थिंक वी कैन कंसिडर इट मोर दैन 2000 rupees also in some cases. So जो 2000 MR points है which you get in a month on spending approximately 20,000, which is just bonus points.
20,000 स्पेंड करने पे जो आपको MR पॉइंट्स मिलेंगे वो दैट इज डिफरेंट। आइए अब हम कैलकुलेशन निकालते हैं कि क्या टेक्निक आपके लिए बेस्ट है टू यूज दिस AMEX क्रेडिट कार्ड एंड कैसे आप अपने रिवॉर्ड्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन गेट अप टू 10% रिटर्न ऑन AMEX। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 2 केसेस लिए हैं। केस 1 6,000 रुपीज़ पर मंथ जिसमें आप अपनी 1,500 रुपये की 4 ट्रांजैक्शंस करेंगे। सो बिल्कुल बेयर मिनिमम 1,500 रुपये को भी हम अगर ऐड करते हैं तो दैट कम्स अराउंड 6,000, तो उसके लिए लिया है मैंने। सेकंड इज इफ यू क्रॉस अ 20,000 मार्क पर मंथ ऑन एवरी मंथ। सो अगर हम बात करें जो हमारे रिडेम्पशन है दैट रिक्वायर्स अराउंड 24,000 पॉइंट्स टू गेट अ गुड डील आउट ऑफ इट। बट जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विथ लेट्स सी, अगर आप हर मंथ 6,000 रुपये की ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर आपको जो बोनस पॉइंट्स मिलेंगे दैट इज 1,000 एंड 6,000 पे 50 रुपीज़ स्पेंड के हिसाब से अगर 1 रुपीज़ हम चेक करें दैट इज 120 पॉइंट्स। द टोटल number of points that you will be getting every month on spending 6,000 rupees in minimum 4 transactions of 1,500 every month is 1,120 MR points. Now if we see कि ये आपको कितना टाइम करना पड़ेगा, this is approximately 22 months that you need to do so that in total you can get around 24,000 points. बट अगर आपको ये चीज़ केस 2 में करनी है वेयर इन यू स्पेंड 20,000 रुपीज़ पर मंथ, इंस्टेड ऑफ 1,000 पॉइंट्स यू विल बी गेटिंग 2,000 पॉइंट्स एवरी मंथ। इंस्टेड ऑफ 6,000 यू आर स्पेंडिंग 20, so instead of 120 points you'll be getting 400 points per month. If you add that up, that's around 2,400 points every month. And आपको 10 months में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, 10 months में you surpass that and you have full 24,000 points. Now if we check AMEX website, AMEX की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास 2 ऑप्शंस है, one is 24,000 and one is 18,000 and this is on the MRCC page. So what I've done is I have noted down कि आपको 18,000 points पे क्या मिलेगा and 24,000 points पे क्या मिलेगा. So if you check, we have few options on 18,000 MR points as well, wherein आपको सिर्फ 18,000 points चाहिए. So अगर आप 6,000 spend करते हो, in that case you will reach that stage at around 16th month of 6,000 rupees. And if you are spending 20,000 per month, then you'll reach at almost 8th month of your spending. So you don't need to spend for the next 2 months to use your 18,000 points. You can simply just, redeem your 18,000 points for a good deal. Now, if we talk about this, अगर हमें 24,000 points use करने हैं in 22 months time, the total amount that you have spent by just spending 6,000 per month is 1,32,000. Okay, wherein you get 24,000 points. But if you are spending approximately 2 lakh rupees in total, which is this, then also you get 24,000 points. Now this process took approximately 22 months, while this just took 10 months. So it's up to you, how do you spend? This is both the cases in which, जो भी आपके lifestyle को suit करता है. If you're a slow spender, if you can just spend around 6,000 rupees per month, maybe this is for you, wherein you have to spend less to get same number of points. But if you can spend more every month and you can, churn out good money on different cards, and then you need to just divide it across. So आप अगर 20,000 rupees on every month you can spend, अगर आपके कुछ spends है, for example you work in a company where company impresses you the money back, or if you normally call it, they reimburse it to you. So in those cases also you can use your personal AMEX. अगर आप इसको यूज़ करते हो, so you get this. Now if you talk about Taj voucher, so the value that you'll get is 14,000 INR. 14,000 INR, if you compare, what you're getting is approximately 10.61% on your amount spent. So if you're spending 1,32,000 and you're getting a Taj voucher of 14,000, you are getting a value of 10.6%.
Similarly, if you are spending the same amount, which is 2 lakhs in just 10 months and then you're redeeming your 24,000 MR points, उसमें भी अगर आप सेम ही वाउचर लेते हो बट आपने जो स्पेंड किया है दैट इज मच मोर, राइट? In that case, you'll be getting around 7% return. So, अगर आपके पास बहुत सारे credit cards है, like you can simply spend 6,000 every month on your card, and sometimes a bit more to surpass that 1.5 lakh mark. And उसमें you can get a very good return, because if you spend 20,000 rupees every month on an AMEX, the type of loss that you're facing over here, as you can see, is approximately 3.6%. So 3.6% is simply going to waste because आप उसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहे हो AMEX को. But if it is free money for you, आपको कंपनी से मिलता है, you can just simply pay it off and आपको कंपनी वापस दे देगी. Why not? It's free money, man. Similarly, if you use Vistara voucher, Vistara का वाउचर आपको 11,000 रुपये का मिलता है. Or comparing it to 1,32,000, it is giving us a return of 8.3%. But again, comparing the same 11,000 Vistara voucher on an amount spent of 2 lakh, you're getting just a 5.5% return, which is again a loss of 2.83%. ये सब use cases मैंने आप लोगों के हिसाब से बनाया है, because somebody might have a different lifestyle, somebody might have a different lifestyle. This is just to suit your lifestyle. आप देख सकते हैं इन दोनों में से कौन सा आपको ज़्यादा बेटर सूट करता है. I'm just giving you a very holistic experience कि आप कैसे इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं. Even if you don't have the card, you don't need to get into it. You can just watch this video, have a good idea, and then maybe if you want, you can apply for it. Similarly, 24,000 MR points for the Amazon voucher you get is around 9,000 rupees, which will give us a value of 6.82%. But similarly, if you spend 2 lakh rupees and then you use this voucher, you are getting a value of 4.5%. Again, you're losing on 2.3% of returns just because you're spending too much on your AMEX. So again, I'd like to tell you that आपको साल में सिर्फ 1.5 लाख रुपए complete करने on this MRCC. You can simply use this card to make some small transactions every month. The amount of redemption offers you get is amazing. Because इसमें भी अगर आप देखो 24,000 MR points है जिसपे you're getting a value of 14,000 rupees. This is a bit more than 50%. अगर हम बात करते एक MR point की value इसमें हमें कितनी मिल रही है. अभी we haven't come to the part where I tell you how you can use your MR points for almost 1 rupees per point. Again, if we talk about 18,000 MR points, so 18,000 आपके 16 months में हो गए थे when you're spending 6,000. Similarly, 10 months में हो गए थे when you're spending 20,000. इसमें the amount spent is 96,000. इसमें the amount spent is 1,60,000. For 96,000, Taj will give you a return of 9.3%. Myntra will give you a return for 8.3%, and Amazon will give a return for 7.29 or 7.3%. Similarly, if you use it for 20,000 rupees per month, what you're getting is such a loss. So the sole reason why I've done this is so that you can get a better understanding आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए with this card if you are planning to get it. So what I've done here is, अगर आप 24,000 points use करते हैं for Taj, Shopperstop, Vistara, Tanishq or anything, and ये उनकी values है, this is the amount of value you're getting for your MR points, membership reward points of AMEX. ये आप देख सकते हो, Taj we're getting 0.58%, Shopperstop we're getting 0.46%, Vistara we're getting 0.46%, Tanishq we're getting 0.42%, Amazon Flipkart is 0.38%. Similarly, if you're using 18,000 points, you're getting 0.5, 0.4, 0.4, 0.39. Now, if you compare this, generally हर कोई Taj का voucher नहीं use कर पाता है. Now, even if we compare Amazon का voucher if you use for 9,000 rupees from the 24,000 MR points catalog, and then the Amazon voucher for 7,000 rupees, you're getting a bit more better value in the 18,000 catalog because it will give you a redemption rate of 0.39, right? And isme you're getting 0.38. So obviously if you can choose between these two, you should definitely use 0.39 because it is a bit more.
But it is up to you. If you want a bit more money, if you have much more points, you can use the 24,000 option as well. Now, this sheet I had prepared a while back. I was a bit busy. I could not make this video. Recently I checked and redemptions rate have changed a bit. The companies have changed a bit. Unka kitna value milta hai, that has changed a bit. So now in this video itself, I am including that as well so that we can discuss upon that. Currently, आप देखो अगर 18,000 में हमारे पहले बहुत ही limited options थे. It was just 5. But now in that we have almost 7 options. Earlier, ताज पे आपको 0.5 मिलता था, अभी 0.5 मिल रहा है. शॉपर स्टॉप पे पहले 0.44 था, अभी 0.39 है. टाटा क्लिक पे पहले 0.44 था, अभी 0.39 है. मिंत्रा पे पहले 0.39 था, मिंत्रा स्टिल 0.39. Amazon पे 0.39 पहले था, now it's 0.33. Flipkart and Reliance Digital is also 0.3. So this is after the recent devaluation of Indian credit cards. अभी recently बहुत सारी companies ने बहुत सारे changes किए अपने बहुत सारे programs में related to credit cards because of the massive adoption that has took place and जिसके वजह से आप ये वीडियो भी देख रहे हैं because there has been such a huge growth in the Indian credit card industry, right? Similarly, if you talk about this 24,000 points in Taj, earlier you were getting a value of 0.58%, 0.58 rupees per point. But again, it's the same. If you talk about Shopper Stop, earlier it was 0.46, now it's 0.42. Vistara was 0.46, now Vistara is not there. Tanishq was 0.42, Tanishq is 0.38 now. Amazon was 0.38. Amazon is 0.33 now. So अब आप देख सकते हैं initially जब पहले आप choose कर सकते थे then you had a better redemption value of 0.39 for 18,000 points. But now after the recent devaluation ये figures अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि now AMEX has also gotten smarter a bit than it was earlier. Always it's smarter than us, but a bit smarter than it was earlier. Now you can see these are the redemption points that you can get. Talking about how did I get the room for free, I'll be sharing that soon. But how can you get this card for free is by simply clicking on the link below in the caption. You can get this card absolutely for free. I'll show you on AMEX website how you can apply for this card and what are the benefits that you will get. I'll not tell you, I'll show it. So this is our previous video जिसमें हमने SBI Vistara credit card की बात की थी. इस पे फिर just come down and if you check this AMEX credit card, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि you get 2000 bonus points and first year free. You click on this and the page will open. इस पेज में अगर आप देखेंगे, see it shows Tanishq has referred you for the American Express. Now this is where AMEX is trying to get sneaky. मैंने कोई कार्ड सेलेक्ट नहीं किया है. They are doing it on their own. I have just shared my link. I don't want you guys to get this platinum travel credit card. I want you guys to get the MRCC because it's bit much more better if you spend in the discussed categories. इसमें currently there's an offer where you get a limited edition Explorers kit. I haven't received it yet. I am yet to receive it, but I'll definitely let you guys know how it is. Again, इसमें आपको 2000 points मिलेगी free for the first year and then obviously first year की free भी आपकी waived off होगी. So if you just want to try out the card कैसा है, how are the features, you can simply use the link, get the card and then you can try. If after 10 months, 11 months you don't feel like the card is for you, you can just close it down. There's no pressure, okay? So ये वाला card नहीं लेना है आपको. You go to view all cards. Either you can see there are so many cards that are present. This is the card. This is the card. Now, बहुत सारे अलग अलग cards हैं जिसमें you'll get 2000, 2000, 2000, 4000, 2000. Best value card is the MRCC. Also, second year onwards, जो हमारी fees है card की, that is 4500. But if you use the referred link, you'll get it just for 1500 from the second year onwards. So there are so many benefits of AMEX. Plus, if you get the card referred by somebody,
the benefits just add more. Also, the most important part, how did I get the value of more than 1 rupees per point for the AMEX card? I think Abhi, you guys are not so invested in this video. I just want to understand how invested are you guys. So let's just hit a goal. If we get 10,000 views on this video, I'll definitely make a new video explaining the whole process, how to get very good redemption value out of your AMEX points. Also, just to not leave you hanging, I'll just give one word. Okay, 2 words. Point transfer. Now the next video that we'll do about these AMEX points will be starting off with points transfer. उसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने AMEX पॉइंट से बहुत अच्छी वैल्यू निकाल सकते हैं. हाउ कैन वी मेक इट वर्थ द वाइल with all the pain that we get here for all this calculation, कि कैसे, how can we get the maximum value out of our points. Until next time guys, thank you so much for watching this video. Bye bye.